Hi guys, welcome to my video series of MCITP and you are watching Flexible Single Operation Masters Part 2. In this part we are trying to explain you that what exactly the concept of this all part like domain naming, schema, forest, domain and all that. Start from the first one, the mylab. Means exactly जब भी आप डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं आपके पूरे मीन्स फॉरेस्ट में जहाँ पर भी होता है एग्जैक्टली ये पांचों के पांचों रोल्स आपके एक ही डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल होते हैं. थिंक इट, जस्ट थिंक इट, बहुत मल्टीपल यूजर्स लॉगिन हैं एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ड्यू टू सम सर्विसेज दिस सर्वर कुड बी ऑफलाइन. क्या होगा, व्हाट विल हैपन? आपने कभी कभी देखा भी होगा ऑर्कुट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर कभी कभी लगाता है ड्यू टू मेंटेनेंस रिको. आई अंडरस्टैंड दैट्स अ सेपरेट पार्ट बट जस्ट कंसीडर उसको इसके पार्ट के साथ अटैच कीजिए. जस्ट इमेजिन कि अगर ये ऑफलाइन है तो ऑर्कुट के ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं या फेसबुक पे जितने भी यूज़र्स हैं वो कभी भी लॉग इन नहीं कर पाएंगे. थिंक इट, देन क्या होगा? सो मैनी पीपल डोंट लाइक बिजनेस लूज एग्जैक्टली बिकॉज वो वेबसाइट सोचेंगे यार बार बार ऐसा होता है हम लॉग इन नहीं कर पाते जब हमें करना होता है समथिंग. सो मैनी थिंक इट. इट्स एन एग्जाम्पल जस्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट एग्जैक्टली बिकॉज ये सारे मास्टर रोल्स अगर आप एक ही डोमेन पे रखेंगे तो डेफिनेटली यही होगा. सो व्हाट इज अ बेटर रिजल्ट? डिवाइड इट. हाउ? लाइक द सेकेंड एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के ऊपर मैंने फॉरेस्ट लेवल के जितने भी हमारे रोल्स हैं मैंने उसको एक डोमेन पे रखा है. दिस इज अनदर वन एंड व्हाट एग्जैक्टली दिस इज व्हाट कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग. शॉर्टली लोड बैलेंसिंग. एडीसी, आपको पता है एडीसी का पार्ट क्या है? एग्जैक्टली ये दोनों सर्वर एडीसी के ही पार्ट हैं. लाइक दिस इज DC1 एंड दिस इज DC2. शॉर्टली. सो दिस इज द पॉइंट. वर्ड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर हाफ पार्ट ये कर रहा हूँ तो इमीडिएटली अगर ये पार्ट हमारा काम करना बंद कर दे तो एटलीस्ट वॉट एवर द सर्विस इज रिलेटेड टू PDC RID इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो प्रोवाइड करवाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ अ गुड ऑप्शन टू सेपरेट देम अप. सो इट्स अ गुड थिंग. ओके, सो नाउ just think it, schema master and what is the global catalog here. मैंने यहाँ पर ग्लोबल कैटलॉग और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेम क्यों नहीं रखा? बिकॉज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर GC ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है पहले वो सोचिए. ग्लोबल कैटलॉग अपडेट ऑल द यूजर्स इंफॉर्मेशंस वट एवर इज कमिंग लाइक फ्रॉम द अनदर डोमेन. टेक एन एग्जाम्पल, हमारे पास दो डोमेन है. दिस इज़ वन डोमेन. डोमेन मीन्स purely domain, not a part, not ADC. It's x.com and this is y.com. अगर यहाँ के कुछ यूज़र्स यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड वे से लॉगिन करना चाहते हैं सो उसको अपडेट करने का, क्रॉस चेक करने का कि या दिस इज़ रियली ऑथेंटिकेटेड यूज़र इन वाई, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन अपडेट करता है? GC. वेर एवर द कॉन्सेप्ट, जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आएगा आपके दो डोमेन्स मीन्स दो डोमेन कंट्रोलर को उसके अंदर बीच में ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन लेवल को एक्सेस करने का लेटर हमारी वीडियोस में क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. बट शॉर्टली बस थोड़ा याद रखिए, हमारे पास एक टॉपिक है साइट्स एंड सर्विसेज, वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में क्लियर करूँगा. और ट्रस्ट रिलेशनशिप. सो राइट नाउ पॉइंट इज, तो ग्लोबल कैटलॉग विल टेक द अपडेट्स फ्रॉम वाई एंड पुट इन टू एक्स. सो व्हाट विल हैपन कि जब भी वो यूज़र लॉगिन करता है आपका पर्टिकुलरली इसके अंदर मीन्स इस पर्टिकुलर सर्वर में वो लॉगिन करने की कोशिश करता है तो इट विल क्रॉस चेक बाय, ही विल आस्क GC आर यू गेट द इन्फॉर्मेशन, please update me. So global catalog will send a information, send a password, means whatever the replication policy, he will send a request to this particular domain controller and update back to the x.com. Once it is updated, then he will authorize to access in the network of the X. So this is what the concept of this. If you put the infrastructure is also here, take an example, I put here and I do not put. Take an example, ये ADC नहीं है, it's a separate DC. So what will happen, इसका जब भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेगा सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट या अदर डोमेन जो भी इसके साथ कनेक्टेड होंगे लाइक दिस वन मोर DC इज़ देयर, ये उसको अपडेट नहीं करेगा. वाई? बिकॉज वो बोलेगा GC इज़ ऑलरेडी अपडेटेड, मुझे किसी को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑन द सिटिंग ऑन द सेम सर्वर हु इज़ ऑलरेडी अपडेटेड, तो मैं किसी को अपडेट नहीं करूँगा. तो यू गॉट द पॉइंट. सो इट्स द सेम पॉइंट. दैट्स वाई इट्स बेटर टू रिलाई ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑन अनदर पॉइंट later in the video we have some diagram, I will explain it later properly, but you got the point. It's a better way to divide into two parts, right? The different part. Okay, now
This is the network deployment situation 1. Got the concept? Means previous concept, I hope you got it, but more explanation. So यहाँ पर as you see, I have some DC, some GC. DCs are well. These are 2 locations. Okay, this is testlab.com. This is mylab.com. It is some consideration कि you have 2 different locations. So यहाँ पर take an example. I have user 1 and this is the RID identity. So what will happen? This is already authenticated to log in testlab, and testlab is already authenticated to log in mylab. So what will happen if user 1 is already updated and it is authenticated user जो login कर सकता है testlab में, जब ये इस location पे जाता है and you can access only if the user 1 is the part of security group. In the very next video, after 2 videos, you will get to know what exactly is security groups and all that. So exactly user 1 is the part of the security group, and wo security group had that name is operation. Same security group is available in the testlab also. Now this one wants to log in here also. So what will happen? The request, I know that I make a user in this part, so definitely global catalog infrastructure, so they know very well, because definitely दोनों एक दूसरे पे अपडेट हैं, उन्होंने अपडेट कर लिया. या we know the user, we know the password, we know the identity, and he will update his own network also because it is connected directly. But the case if your domain controller or means other domains available in the different locations, so what will happen? The request come, GC said, DC said, yeah, first global catalog, definitely global catalog send a request, update the information and said, okay, I know who is user 1 now, don't worry. Hey DC, I update the user 1, there's no new user comes. Okay, that's good. Now the request from the GC to the infrastructure sent by the request. So infrastructure take the information not from DC, he take the information from GC, global catalog. Once he will said, I got the information of user 1, please update yourself also, that user 1 is already updated and it's a part of the operation group and it is logged in the security group and all that and fully authenticated user. तो infrastructure क्या करेगा? Okay, I will update this information and update other also. So infrastructure master update other domains what is available. So now user 1 is authenticated in the complete network of the test lab, because infrastructure he is taking the updates from the GC. If infrastructure is available on the same GC, he is not about to update the DC. The same thing, the situation 2, I'm trying to explain the same thing. Here, take an example, I make a user. Now I'm on this side. Okay, so now I make a user, whatever is the same situation, Here is perfectly designed, perfectly network topology is already designed. So Harsh make the on DC, DC will send to GC, GC will update to infrastructure, update infrastructure to other DCs. But now the situation is what? Now from test lab to the my lab he has to authenticate. तो authenticate के लिए वो request आपका send करेगा GC. DC से जब request जाएगी यहाँ पर तो क्या होगा? यहाँ पर आपने देखा infrastructure and GC both roles are on the same part. So क्या होगा? Infrastructure update नहीं करेगा. वो क्या बोलेगा? I do not have anything to update to anyone. I already updated because GC is with me. So you get it, you get the point. Just like in the small house, there are 2 brothers, one is big, one is small. So कभी क्या होता है कि big brother अगर small brother अगर कुछ ज़्यादा tease करता है big brother को और big brother उसे डांट दे, so small brother जाता है, I have the support for the mom and dad, whatever you want to do, do. So that means, you know, it's a concept. Simply same is here. Global catalog is a kind of parents and is a small brother and it's a big brother. So big brother definitely is do not have anything. So here DC is not about to update related to Harsh. That's why the information is not updated. So still if in this network Harsh wants to update, so Harsh is not about to update. Why? The information is not available on DC. So that's the concept of this one. So just for your information, I will remind everything again. डोमेन नेमिंग मास्टर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी नेटवर्क में हमारे जितने भी डोमेन कंट्रोल के नेम्स है, west.mylab.com, north.mylab.com, south और समथिंग चाइल्ड डोमेन्स, वट एवर. सो
उनमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो और उन सब की इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली मेंटेन करना नेटवर्क में. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम डोमेन नेमिंग मास्टर. Schema is providing the skeleton structure to all the users, groups, domain controllers, informations, attributes, especially. So this all related to that one. Infrastructure, as I already explained you, it will take the responsibility to update the domain controller is available in the forest. RID master specifically user information updates, so it will take the updates from the user. What is the next identity, is their identity uniform or unique identity provide. RID master करवाता है. PD simulator take the responsibility of password authority. So this is the part 2, and I will show you the practical of this particular video in the part 3. Thank you so much for watching.